Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri ma'am. Today let's solve one question from GATE examination for biotechnology 2018. Which one of the following metabolic processes in mammalian cells does not occur in the mitochondria? The question is from metabolism. So options are citric acid cycle, whether it is a oxidative phosphorylation or it is a fatty acid beta oxidation, and the option D is a glycolysis. The question asks that which of the following cycle does not occur in a mitochondria. Okay, discussing option wise. So first option is the citric acid cycle. This is also known as a Krebs cycle because Krebs was its inventor. Then tricarboxylic acid cycle is another name for citric acid cycle. This occurs in matrix of mitochondria. The overall reaction अगर देखें citric acid cycle की तो acetyl CoA plus 3 NAD plus FAD plus GDP plus 3 water molecules are involved. इससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड 2 CO2 plus 3 NADH plus FADH2 plus GTP and water molecules are formed. So जो भी कंपाउंड एसिटिल CoA फॉर्म करेगा इट कैन एंटर इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल. जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल को मेटाबॉलिक हब भी बोलते हैं. मतलब क्या कि some of the reactions in pyrimidine biosynthesis, some of the reactions from the amino acid synthesis, purine synthesis के हो या फिर fatty acid metabolism के हो, कुछ reaction citric acid cycle में से जाते हैं. तो जैसे कि ये हब है, यहाँ से 2-3 रिएक्शन किए अपने अलग से रिएक्शंस के लिए चले गए. इस तरह से हो सकता है. That's why this is known as a metabolic hub. Or according to our question, this takes place in a matrix of mitochondria. So this is not the answer. Moving to the next option, the second option is oxidative phosphorylation. That is nothing but electron transport chain. तो यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के एंजाइम होंगे जहां पर एटीपी सिंथेसिस होता है. इसे सजेस्ट करने के लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी सजेस्ट की जाती है जो कहती है कि प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स रीजन दिस इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. And then using ATP synthase, protons due to the electrochemical gradient get created और उस electrochemical gradient की वजह से ATP synthase से प्रोटॉन मैट्रिक्स में जाते हैं जब ATP synthesis होता है. This is nothing but oxidative phosphorylation. तो ये this takes place in a inner mitochondrial membrane. Option C is fatty acid oxidation, that is a beta oxidation. यहाँ पर beta carbon of fatty acid is oxidized and that's why the process is known as beta oxidation. This takes place in a mitochondria and there is a sequential removal of 2 carbon compound every time. 2 कार्बन की चेन हमेशा रिलीज होती है जब एक साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन की हो जाती है. Moving to the last option. The last option is glycolysis. This is also known as Embeden-Meyerhof pathway. Here, one molecule of glucose get degraded into 2 molecules of pyruvate. There is a sequential events of reactions. 10 reactions होती है glycolysis में और उस reaction step से हमें 2 pyruvate के molecules मिल जाते हैं.
इफ यू रिमेम्बर, जो आगे चलकर TCA साइकिल में एंटर होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोए, और उसके बाद इट एंटर्स इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर ATP सिंथेसिस हो जाता है। तो ये जनरली हम सीखते आए हैं। तो यहाँ पर दिस glycolysis take place in a cytosol. So with this we will say that option D is the correct answer for this question. Glycolysis is the process occurs in the cytosol, and all other citric acid cycle, oxidative phosphorylation and fatty acid beta oxidation, these three occurs in mitochondria. So the answer is option D. Here I have concluded with today's video. I will be there with more solved questions from the GATE examination. You can also visit my channel. I have many videos explaining questions from IIT JAM examination, then TIFR GS examination, JNU entrance examination. Also, I have lecture videos with my channel. So I request you to go through my channel and also to like, share and subscribe for my channel and hit the bell icon. Thanks for watching.